The next question, convert 1011010101 in the base 2 binary, say base 8 and base 16. So we need to convert these two numbers, okay, from binary into base 8 and base 16. All right. So guys, बहुत तरीके इसको solve करने के, मतलब पहला तरीका तो यही है कि what generally 90% people do is that they convert the entire thing into decimal first और फिर base 8 या base 16 में convert करते हैं, right? Okay, I'll tell you a quick shortcut to solve these questions. Okay, जब भी आपको बाइनरी से कन्वर्ट करना होगा, आप ऑक्टल या फिर बेस 8 और बेस 16 में, okay, और बेस 4 में, और अदर एनी बेस, okay, that is basically powers of 2 only. So if you know base 8 is 2 cube, okay, and base 16 is 2 raised to 4, right? Okay, so जब भी ऐसा कंडीशन होगा, आपको बाइनरी that is 2 raised to 1 से कन्वर्ट करना पड़ेगा पावर्स ऑफ 2 में ही. We have a quick shortcut. Okay, so I'll tell you 1011010101. Okay, we know that 8 equals to 2 cube, right? तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, वी विल फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 3 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट. सो देखो ये 3 का एक ग्रुप बन गया 101. ओके, उसके बाद 010 का एक ग्रुप बन गया, 011 का एक ग्रुप बन गया, एंड 1 इज रिमेनिंग इन द एंड, राइट? नाउ व्हाट वी डू इज ट्रीटिंग ऑल दीस नंबर्स सेपरेटली एज बाइनरी. ओके, वी विल कन्वर्ट देम इनटू डेसिमल, राइट? बिकॉज़ हमने बेसिकली यही फंडा यूज किया है कि 8 इज 2 क्यूब, राइट? तो जो भी नंबर यहाँ पे बाइनरी में दिया हुआ है, यू कैन सिंपली ब्रेक इट इनटू 3 पार्ट्स. Okay, such that octal system में हर एक नंबर को आप basically binary में break कर रहे हैं. Okay, 3 parts, all of which you are breaking into binary, right? Okay, so 101 guys, ये अभी दिया हुआ है हमें binary में. Okay, it's 2 raised to 0, 2 raised to 1 into 2 square, right? So 1 into 2 square, 0 into 2 raised to 1, 1 into 2 raised to 0. So convert करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 square plus 1, which is nothing but 4 plus 1 is 5. Okay, so ये हो गया 5. Next 010 है. 0 into 2 raised to 0 plus 1 into 2 raised to 1 plus 0 into 2 square, it's basically equal to 2. Okay, same way आगे बढ़ते हैं. Okay, we have 1 into 2 raised to 0, 1 into 2 raised to 1 plus 0 into 2 raised to 0. ये हो जाएगा 2 plus 1 3. And last guys, अकेला नंबर ही है 1, इसको ऐसे लिख दो आप. 1325 is the number required in base 8. Okay, अब इसी से आपको हिंट आ गया होगा guys. Base 16 means basically it will consist of 2 raised to 4, right? तो हम क्या करेंगे, इसी सीक्वेंस ऑफ नंबर को ब्रेक करेंगे into small parts. Okay, 4 parts each starting from the right. So 4 4 4 ऐसे 3 पार्ट बन गए, right? Again same thing. Okay, convert this into decimal system, treating this as binary. So 2 raised to 0 है, 2 raised to 1 है, 2 square है, and 2 cube. So 1 into 2 raised to 0 is 1 into 1. 0 into 2 raised to 1 0 ही रहेगा. 1 into 2 square is basically 4. 4 plus 1 is 5. Okay, so units place पे again we have 5. Okay, next 1011 ये है 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 square and 2 cube, right? So we have 1 into 2 raised to 0, which is 1 into 1. 0 into 2 raised to 1, 0 ही होगा. 1 into 2 square is 1 into 4, which is 4. 1 into 2 cube is basically 1 into 8, which is 8. So 8 plus 4 plus 1 is nothing but 13. Okay, but basically ये आप convert कर रहे हो base 16 में, right? So again guys, 13 won't be a number, it will be a symbol, which will be nothing but D, right? So 30 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? D लिखेंगे. So replacing the entire thing with D, right? And again we have last में 10 as like a singular part, right? अलग separate वाला part. So it is 0 into 2 raised to 0, 1 into 2 raised to 1. 2 plus 0, that is 2. So you replace this with 2, and that gives you 2d5 in the base 16. All right. So the first question is add 2 3 4 in the base 5 and 3 2 3 in the base 5. Okay. Okay. अब समझते हैं guys exact difference कहाँ पे आता है. See, अगर रेगुलरली आपको यहाँ पे मैंने ऐड करने दिया होता, लेट्स से एक नंबर होता 286 and then you would have had let's say 351. तो गाइस अब हम क्या करते हैं, सी हमको जनरली ऐड करने का हैबिट कैसा लगा हुआ है, 6 plus 1 हम लोग लिखते हैं 7, राइट? ये डायरेक्टली हम क्यों करते हैं, बिकॉज गाइस वी हैव द डेसिमल सिस्टम, हमारे पास 9 तक सिंबल्स है ग्रेटेस्ट. सो 6 plus 1 के 7 दिखाने के लिए हमारे पास एक सिंबल है, दैट इज 7 इटसेल्फ, राइट? सो हम इसको ऐसे लिख देते हैं. बट अगले स्टेप में क्या होता है गाइस, 8 plus 5 हम करते हैं. सो वी हैव 8 9 9 के बाद अगला कोई सिंबल नहीं है हमारे पास, अगला नंबर क्या होगा, 10 होगा. सो वी हैव 9 10 11 12 and 13 ऐसे काउंट करते हैं फिंगर पे, राइट? 5 तक काउंट करते हैं. ओके, 9 10 11 12 13. ओके, सो वी राइट अ 3 हियर एंड वी पुट अ 1 कैरी. अगेन 1 plus 2 लिखते हैं 3, 3 plus 3 लिखते हैं हम लोग 6. व्हाई? बिकॉज हमारे पास 3 plus 3 लिखने के लिए एक सिंबल है, दैट इज 6. सो द आंसर विल 637. ओके, अब गाइस यही फर्क यहाँ पड़ जाएगा. इफ द गिवन नंबर्स 2 3 4 and 3 2 3, अगर ये यहाँ बेस 5 में है, बेस 5 है मतलब हमारे पास द ग्रेटेस्ट नंबर अवेलेबल इज नथिंग बट 4, राइट? तो जहां भी हमारे काउंटिंग में जो आंसर है, जो भी ऐड करते वक्त कोई डिजिट अगर 4 से ऊपर जा रहा है, तो 4 के आगे हम लोग 5 6 7 नहीं लिखेंगे, राइट? 4 के आगे हम लिखेंगे 10 11 12 सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? बिकॉज हमारे पास 4 से ऊपर डिजिट ही नहीं है.
Okay, so let's start by adding 2 3 4 with 3 2 3. Again procedure will remain the same, exactly same. Okay, we add the units digit first, 4 and 3. Okay, now as I told you guys, 4 plus 3 यहाँ पे 7 नहीं होगा भाई, because हमारे पास digit highest 4 ही available, it's base 5, right? So value for 4 plus 3 is nothing but 4 के आगे 3 step count करेंगे हम लोग, 4 के आगे 5 नहीं, अब क्या आएगा 10 आएगा. So we have 10, 11 and then 12, right? So just like the usual addition that we do, we'll put 2 and we take 1 carry. Okay, and the next step we'll add the tens places. Okay, again guys, in the tens places, okay, हम लोग अब 3 और 1 पहले ऐड करेंगे. 3 plus 1 4 हम लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज हमारे पास बेस 5 है. ओके, मैक्सिमम सिंबल 4 तक अवेलेबल है, बट गाइस 4 में वापस अब 2 ऐड करना पड़ेगा, राइट? ओके, बट नाउ टू ऐड 2 आई डोंट हैव सिंबल्स 5 and 6, राइट? ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से 2 आगे 10 और 11 लिखेंगे. So we put a 1 right here and we put a 1 carry. Okay, and now we put the, or we add the hundreds places. Okay, when you do that, you add 3 plus 1 again, 3 plus 1 becomes 4, and 4 plus 2 again gives you 10 and 11, right? So it's triple 1 2 in the base 5. Okay, 23 and let's say 12 if you want to multiply in base 5. Okay, so again guys, the procedure is very usual that we do. Okay, we'll start by multiplying the units digits. Okay, 2 and 3 multiply करेंगे पहले. ओके, अब देखो अगर डेसिमल है तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, 2 into 3 सीधा हम लोग क्या लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं यहाँ पे. ओके, बट द प्रॉब्लम इज द बेस गिवन टू अस हियर इज 5. ओके, एंड गाइस बेस 5 हैज मैक्सिमम 4 एज अ डिजिट, राइट? तो 3 into 2 6 को हम लोग यहाँ पे 6 नहीं लिख सकते, राइट? 6 जो है वो 4 से 2 स्टेप ऊपर है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4 plus 1 10 plus 1 11, राइट? सो वी राइट अ 1 here and take a 1 carry. ओके, नेक्स्ट स्टेप अगेन वी मल्टीप्लाई 2 and 2. ओके, यूनिट्स प्लेस ऑफ द नीचे वाला नंबर एंड टेंस प्लेस ऑफ द ऊपर वाला नंबर, राइट? 2 2 अगेन वी हैव 4. ओके, अगर ये 4 रहेगा तो हम 4 ऐसे लिख देंगे, राइट? बट हमको वापस अब 4 में ये 1 ऐड करना है, राइट गाइस? ओके, एंड सिंस 4 इज द मैक्सिमम डिजिट यू हैव, 4 plus 1 won't be 5 here in this case. 4 plus 1 will become 10. So I write 1 0 over here. Okay, again next. Okay, I put a cross over here, our usual multiplication वाला method जो हम यूज करते हैं. Okay, next step is 1 into 3. ये तो 3 होगा, and 1 into 2 guys, ये वापस क्या होगा, 2 ही होगा, right? And the last step is to add them. Okay, the units place 1 plus dash becomes, or 1 plus 0 becomes 1, 0 plus 3 becomes 3, and 1 plus 2 becomes 3. So the answer is 331 in the base 5. Okay, triple 1 in the base n plus triple 2 in the base n plus triple 3 in the base n up to triple 9 in the base n equals to 17145 in the base 10. Find 123 in the base 10 will be what in this given base n. Okay, so what you can do here is guys, first of all you can make the bases same on both sides. यहाँ पे base 10 दिया हुआ है हमें, and इस side में base n दिया हुआ है हमें, right? So we'll just make the base 10 on both sides because we are used to solving in decimal. अब देखो गाइस, ट्रिपल 1 है इन द बेस n, राइट? ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये हो गया अपना वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 थर्ड डिजिट. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 into n square, राइट? प्लस ये क्या है, सेकंड डिजिट, ये क्या हो जाएगा 1 into n raised to 1, प्लस थर्ड डिजिट क्या है गाइस, वापस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 into n raised to 0, राइट? सिमिलरली ये क्या है, ट्रिपल 2 इन द बेस n. ओके, ट्रिपल 2 इन द बेस n इज नथिंग बट 2 into n square. ओके, उसके बाद 2 into n raised to 1 plus 2 into n raised to 0. ऐसे ही होगा ना. वापस ट्रिपल 3 इन द बेस क्या होगा, 3 into n square, 3 into n raised to 1, 2 into n raised to 0. This will continue up to triple 9 in the base n, right? 9 into n square plus 9 into n raised to 1 plus 2 into n raised to 0, or 9 into n raised to 0, right? इन सभी को हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, ऐड करना पड़ेगा. 1 वाला 2 वाला सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ओके, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी गेट. आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन वेरी क्लीनली. ओके, अब गाइस ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हमारे पास n स्क्वायर के कुछ टर्म्स है, n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, 3n स्क्वायर अप टू 9n स्क्वायर, राइट? एंड n raised to 1 के कुछ टर्म्स है, 1n raised to 1, 2n raised to 1, 3n raised to 1 up to 9n raised to 1, isn't it? Okay, and last, okay, we have n raised to 0 वाले terms, 1n raised to 0, 2n raised to 0, 3n raised to 0 up to 9n raised to 0, right? Okay, तो हम क्या करेंगे guys, we'll take all the like terms together, n square के सारे terms together, n raised to 1 के सारे terms together, and n raised to 0 के भी सारे terms together. Okay, so just writing n square के सारे terms together guys, तो क्या हो जाएगा, 1 plus 2 plus 3 up to 9, ये सारे एक साथ आ गए. 1 plus 2 plus 3 up to 9, ये भी सारे एक साथ आ गए, and 1 plus 2 plus 3 up to 9, ये भी सारे एक साथ आ गए, right? Okay, now between these three you can observe very clearly now. 1 plus 2 plus 3 up to 9 सब में common है, right? 1 plus 2 plus 3 up to 9, 1 plus 2 plus 3 up to 9, सब में वही चीज common है, right? So take it out as common between these three, and you'll be left with n square plus n raised to 0, which is nothing but 1. इनको हमने एक साथ कर लिया यहाँ पे, right? Now guys, this is nothing but summation of first n natural numbers, right? This is nothing but n into n plus 1 divided by 2, ये हो जाएगा 45, right? So replace the entire bracket by 45.
ओके एंड नाउ यू कैन स्टार्ट बाय कैंसिलिंग आउट गाइस. इफ यू ऑब्जर्व यहाँ पे 45 जो है वो 3 से डिविजिबल है. इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या है? 8 9 देन 13 हाँ 18. ये भी 3 से डिविजिबल है एंड दोनों का यूनिट्स प्लेस 5 है राइट. तो दोनों 5 से भी डिविजिबल है. ओके मतलब पूरा नंबर 15 से भी डिविजिबल होंगे राइट. 3 एंड 5 सो 15 वंस आ. ओके देन उसके बाद 15 वंस आ किया हमने वापस 15 वंस आ हो जाएगा. 15 फोर जा 60 एंड उसके वापस 15 फाइव जा सॉरी 15 थ्री जा 45 माय बैड. ओके एंड ये हो जाएगा 3 जा. सो वापस 3 3 जा 9 3 8 जा 24 3 8 जा और 3 1 जा 3 तो 381 हो जाएगा. Okay, so n square plus n is nothing but 380. If you factorize 380 as 19 into 19 plus 1, directly आपको मिल जाएगा n equals to 19. Okay, तो अब हमने basically find किया है the base that is 19. Okay, मैंने जानबूझ के step by step description दिया है guys आपको when I am solving और when we are solving. Okay, आपको directly question देख के सीधे इस step पे लिखना आना चाहिए. Okay, you should not waste your time writing these two steps because that makes the question very very lengthy. Okay, आप सीधे पहले इसको ऑब्जर्व करो फिर इसको ऑब्जर्व करो खटाक से स्टेप पे आ जाओ एंड n equals to 19 निकाल लो. Okay, very very easily while solving. Okay, I know starting में थोड़ा difficult होगा but धीरे धीरे when you solve more and more questions, when your speed and your accuracy increases, okay, and your calculations again become when you become basically more number friendly. Okay, ये सब चीज अपने आप धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा. Okay, now next they are asking you 123 in the base 10 है. इसे हमें बेस 19 में कन्वर्ट करना है. वेरी सिंपल. 123 इन द बेस 19 so divide by 19. 19 6 the remainder is 9. The answer is 69 in the base 19 and that's why it's basically the D option, that is none of these. Okay, now I know मैं कितना ही बोलूं आपको मेरा ये वाला सॉल्यूशन पसंद नहीं आएगा because it's very lengthy. Okay, we'll see a very quick shortcut और lengthy से के झटके जगह पे very quick and a very easy shortcut to solve the same question. Very very easy it becomes now. अब देखो guys, यहाँ पे जो मैंने लेफ्ट साइड में मैंने क्या लिखा है? लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है 999 टू द बेस n राइट. मतलब वो जो बेस n है उसमें 9 भी एक डिजिट है राइट. गाइस वी नो एक पर्टिकुलर बेस n में द मैक्सिमम डिजिट इज n-1 राइट. इट गोस फ्रॉम 0 से n-1 राइट. तो अगर मैंने 9 लिखा है यहाँ पे राइट दैट मींस दैट इज the base has definitely more than 9 as a digit. 9 से ज्यादा डिजिट तो है ही अपने पास. ओके या बेसिकली 10 से ऊपर डिजिट तो है ही हमारे पास. ओके बिकॉज 999 is a number which I'm writing here. Okay, so I know from here that n will be definitely greater than or equal to 10. Okay, first observation. Okay, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है गाइस द राइट हैंड साइड इज 17145. वेरी बिग नंबर राइट. ओके 17145. अगर बेस 10 भी होता तो हमारे पास ये क्या होता? 999 देन 888 777. ओके 999 अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास है. ऐसे 10 नंबर है 1000 into 10 10,000 ही होता बेसिकली राइट है ना. बट 17,000 दैट मींस the base okay the value of n is definitely more than 10 also right. okay because base 10 में ही 10,000 के आसपास आ रहा है उससे बड़ा है अपना वैल्यू राइट. अगर ये नंबर 10 से ज्यादा है गाइस ओके हमने क्या सीखा है क्लास में थोड़ी देर पहले लेक्चर में कि whenever we are changing it from a lower base to a higher base the number का value will reduce. तो आपके ऑप्शन जो होंगे सारे उनमें से आंसर जो होगा वो 123 से कम ही होगा राइट. 123 से कम एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन. Very simple, right? You don't need to lift up your pen to solve this question. By these two observations, very, very simple, you can directly mark D and your question is solved. Okay.